ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter number 25 and text number 17. पाठ करें श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 32 श्लोक क्रमांक 17। पूर्यः तु बाह्य उपवने दिव्या ध्रुमा लथा आकुले नदत् विहंगा अली कोला कोलाहला जल आशये पूर्यास्तु भायोपवने पूर्यास्तु भायोपवने दिव्यद्रुमलताकुले दिव्यद्रुमलताकुले नदद्विहङ्गलैकुला नदद्विहङ्गालिकुला कोलाहला जलाशले पूर्यस्तु भायोपवने दिव्यद्रुमलताकुले नदद्विहङ्गालिकुला कोलाहला जलाशये पूर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमलताकुले नदद्विहङ्गालिकुला कोलाहला जलाशये. Word to word meaning. Puryaha, of that town. Tu, then. Bahya upavane, in an outside garden. Divya, very nice. Dhruma, trees. Lata, creepers. Akule, filled with. Nadat, vibrating. Vihanga, birds. Ali, bees. Kula, groups of. Kolahala, humming. Jala ashaye, with a lake. Translation and purport by His Divine Grace Savai Charana Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. On the outskirts of that city were many beautiful trees and creepers encircling a nice lake. Also surrounding that lake were many groups of birds and bees that were always chanting and humming. Shall I read purport also? Yeah. Okay. उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे, जो सदैव कूदते तथा गुंजार करते। तात्पर्य: चूंकि यह शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है, अतः उसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशयों तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं, उनकी चर्चा यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। क्योंकि शरीर में इंद्रियां होती हैं, अतः उम्र आने पर चाहे नर हो या नारी, कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। व्यक्ति जब तक बालक रहता है, सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होती,
कामोत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थितियों की उपमा सुंदर उद्यान से दी गई है। जब कोई स्त्री को देखता है तो सहज ही कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य एकांत स्थान में स्त्री को देखे और उसका मन उत्तेजित ना हो तो वह ब्रह्मचारी समझा जाता है, किंतु ऐसा कर पाना प्रायः असंभव है। काम वासना इतनी प्रबल होती है कि स्त्री के दर्शन, स्पर्श या बोलने से या उसका विचार आने जैसे ऐसे कई कारणों से मनुष्य उत्तेजित हो उठता है। फलतः ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग में विशेष रूप से एकांत में रहने के लिए वर्जित किया जाता है। शास्त्रों का मत है कि स्त्री से एकांत में बातें नहीं करनी चाहिए, भले ही वह अपनी पुत्री, बहन या माता ही क्यों न हो। कामोत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि विद्वान से विद्वान पुरुष ऐसी परिस्थितियों में उत्तेजित कामुक होता है। यदि ऐसी स्थिति है तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तरुन्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। Welcome to you all on this today's Srimad Bhagavatam discourse. आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। So I am very fortunate to be here in this Bhopal Kshetra, ISKCON Shri Shri Radha Gauravalabh Ji Mandir. मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ श्री गौर राधा वल्लभ मंदिर में भोपाल में। So I am not qualified to discuss on this Srimad Bhagavatam, that too the today's topic. मैं योग्य नहीं हूँ श्रीमद् भागवतम के विषय पे चर्चा करने में, और आज का प्रसंग है इस बारे में। So that too the particular subject is a challenging subject. So please forgive me for any offenses. So it is my purification. So it is an opportunity to realize so on these topics. तो आज का विषय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि कुछ मैं प्रयास करूँगा अपनी जो साक्षात्कार है वो आपको बता दूँ। So I joined in Tirupati as an employee in the constructions of the temple. So I was not interested in Krishna consciousness. मैं तिरुपति मंदिर में ज्वाइन हुआ था, तो एक एम्प्लॉय जैसे कंस्ट्रक्शन में, और मेरे तब कृष्णा भावनामृत में कोई रुचि नहीं थी। So every day I was working and going outside, and I was doing whatever I want. मैं वहाँ पे काम करता था और जब भी समय मिलता था बाहर चला जाता था और जो मन में आया मैं करता था। So in the morning hours after the Mangalarti, so after 6:30 to 7 o'clock, our temple president Prabhuji, His Grace Revati Raman Prabhu, was taking the morning class for all the brahmacharis. सुबह मंगल आरती के बाद 6:30 से 7 बजे तो हमारे जो मंदिर के अध्यक्ष थे श्रीमान रेवती रमन प्रभु, वो सभी ब्रह्मचारी इसका क्लास लिया करते थे। So that class was on Brahmacharya Ashram. The book he was reading was The Brahmacharya and Krishna Consciousness by His Holiness Bhakti Vikas Maharaj. विक्रम जी ब्रह्मचर्य कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य पुस्तक है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज द्वारा लिखी, उसी में से पढ़ते थे और क्लास लेते थे। So every day the class was conducting. So I was coming from outside and was sitting at the back side. So and I was hearing the class. रोज वो क्लास होती थी तो मैं पीछे बैठ जाता था और क्लास सुनता था।
So it was a very strong subject, naturally. So I was not intended, but slowly the association of the devotees by the mercy of Prabhupada and Guru, the association of the devotees. So I slowly became like this now in front of you. हालांकि मेरी कोई रुचि नहीं थी, मैं ऐसे ही बैठ जाता था, पर धीरे धीरे प्रभुपाद जी की कृपा से भक्तों के संग द्वारा मेरा शुद्धिकरण हुआ और अभी मुझे अपडेट कर रहा है। But the topic is totally is the challenging, the subject what we are discussing now. तो आज जो हम विषय चर्चा करेंगे तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। So the topic is about the Puranjana, King Puranjana. The Parchetas, so they were sent by his father for the self-realization, to understand the life, to rule the kingdom in the spiritual manner. He was sent by his father, Prachinbari. प्रचेता ने उनको भेजा गया था उनके पिता प्राचीन वंश द्वारा कि वो आत्म साक्षात्कार करें, तपस्या करें और वो तैयार है सभी फिर साम्राज्य को शासन करने के लिए। Of course, the Prachinbari was in the Karmakanda follower, but he wanted his sons to be the great spiritualized persons. That's why he sent for their realization. हालांकि प्राचीन मनीषक कर्म कांड का अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को रचयिताओं को भेजा आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए। So we know in the previous chapter, the Prachetas, they went and they met Lord Shiva, the Param Vaishnava, and Shiva preached him the Rudra Gita. So they did tapasya for 10,000 years in the water. So they got realization. पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे जो प्रचेता थे वो जाते हैं और वो जल में 10,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की, तो उनको शिव जी के दर्शन होते हैं और शिव जी उनको रुद्र गीत का उपदेश देते हैं। पिछले अध्याय में हमने ये सब देखा। So in this chapter, the 25th chapter, the descriptions of the characters of King Puranjana. So this discussion is between Maitreya Muni and Vidura. ये जो 25वां अध्याय है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, इसमें जो चर्चा हो रही है वो मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच। So in the first text, the great sage Maitreya continued speaking to Vidura. My dear Vidura, in this way, Lord Shiva instructed the sons of King Barishat. The sons of the king also worshipped Lord Shiva with great devotion and respect. Finally, Lord Shiva became invisible to the princess. इस अध्याय के पहले श्लोक में उल्लेख आता है, महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिवजी ने इस प्रकार से राजा भरीषट के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिवजी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। So, in this purport, there is a sentence: the human form of life is especially meant for understanding God, our relationship with Him, and our activities in His service. इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो विशेषकर हमें मिला ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में कार्य करने के लिए। So, ahara nidra bhaimayutanam cha samanvaheto pashubhe naranam dharme hitesho adhiko vishesho dharme nahina pashubhe samana. So, all the 84 lakh species are meant to these activities: eating, sleeping, and mating and defending. But the dharma is given only to the human body. आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो सभी 84 लाख योनियों में होता है, लेकिन धर्म एकमात्र मनुष्य जीवन में ही संभव है। So that dharma is atato brahma jnana. The first point is understanding who am I. धर्म का पहला सोपान है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये हम समझने का प्रयास करें कि हम कौन हैं। So, but the jiva has traveled in so many bodies and it has so many anarthas, and
Moment it comes to the human body, immediately it cannot understand what is the realization. जीवात्मा अनेक अनेक योनियों से फिरता हुआ वो मनुष्य देह को प्राप्त होता है, तो उस समय वह नहीं समझ पाता कि उसको जीवन का क्या उद्देश्य है। So Brahmanda Brahmite, according to that shloka, it is traveling in upper planets, lower planets, is having its journey in whole universe. It's making its journey. तो जीवात्मा उच्च लोकों में निम्न लोकों में भ्रमण करता हुआ एक प्रकार से यात्रा कर रहा है। So in these yatras, it is having so many tests with it. It is carrying so many tests. Tests. तो इन यात्राओं के दौरान जीवात्मा की कई प्रकार से परीक्षा भी होती है। So these are all anarthas. So while carrying these anarthas, the body, the human body, suddenly it will not realize to the purpose of this life. जीवात्मा अपने साथ अनर्थों की गठरी लेके घूम रहा है, तो उसको मनुष्य जीवन मिलता भी है, तभी वह समझ नहीं पाता। So in the previous verses of this chapter, Prachin Bari is asking Narad Muni, so I am not getting the purpose of this life. Please explain me what to do. He is explaining. Humbly he is explaining. इससे पहले हमने देखा राजा प्राचीन परिषद नारद मुनि से पूछे कि मैं नहीं जानता मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, इसलिए आप मुझे उपदेश दीजिए। So of course he was doing karma kanda activities, the activities connected to the bodily pleasure. So then Narada Muni was very compassionate. So he wanted to preach Prachinabari. He wanted to tell the purpose of human life. राजा प्राचीन परिषद कर्मकांड की क्रियाओं में लिप्त थे, तो नारद मुनि दयावश उनको आत्मिक साक्षात्कार उपदेश है वो प्रदान करते। Because he was in parampara. So he was from Manu, Dhruva, Prutu Maharaj. He was in the parampara. And Narada Muni was very compassionate. He don't want that lineage should not be declined. क्योंकि राजा प्राचीन परिषद वंशज थे, परंपरा में आ रहे थे ध्रुव महाराज की, मनु ध्रुव महाराज से, और नारद मुनि चाह रहे थे कि तो इतने महान परंपरा में कोई व्यक्ति है उसका पतन ना हो। So that's why he was telling the story of Puranjana. He wanted to tell the story of Puranjana. तो इसलिए नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को पुरंजन की कथा सुनाते। So he was doing karma kanda because he was in that rituals. He was doing the rituals. He don't know what is the purpose, and he was thinking that was the right thing what he was doing. राजा प्राचीन परिषद कर्मकांड के रिचुअल्स थे उसमें लगे हुए थे, और वे भी उसका उद्देश्य जानते थे कि ये सब लोग क्यों कर रहे हैं। So here so many times we think that what we are doing that is the right thing. We are thinking like that. बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, But the spiritual master will guide us what to do, what is right and what is wrong. आध्यात्मिक गुरु हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। So in one family they were doing Satyanarayana Vrata every year. तो एक परिवार था जहाँ पर सभी सदस्य हर साल सत्यनारायण की कथा करते थे। So while performing that Satyanarayana Vrata, in their house there was a cat. They were pet cat in their house. तो उनके घर में एक पालतू बिल्ली थी। So while performing the rituals, it was coming in between and it was disturbing. तो जब वो ईश्वर सत्यनारायण व्रत कर रहे थे तो बिल्ली बार बार आती थी और उनको डिस्टर्ब करती थी। So what that owner did, he made that cat and put it under one basket. So he put one basket opposite. तो वो मकान मालिक ने क्या किया कि एक टोकरी ली और बिल्ली को उसमें कैद कर दिया। And the ritual was over, and his son, small kid, was observing this, what is happening in the house. और जब रीति रिवाज पूरे हो गए तब वहाँ पर वो बच्चे वहाँ पे सब देख रहे थे।
So it was a custom like that only, because every time he was seeing that the cat was disturbing and they were putting under the basket. So days were passed and he went for studies. He went to abroad. He studied and he came back. So his father was no more, and for the benefit of his family, in the memory of his father, parents, he wanted to make the performance of Satyanarayana Vrta in his house. जो परिवार का जो बच्चा था वो बड़ा हुआ, वो पढ़ने गया विदेश, फिर काफ़ी समय बाद वापस आया, उसको पता लगा उसके पिता का तो देहांत हो चुका है, तो फिर वो सत्यनारायण व्रत रखना चाहता था, अपने पूर्वज ने बताया उनकी उनके साथ प्रति के लिए। He met one pujari and he called him and he wanted to perform Satyanarayana Vrta, and he asked for the list. What is the puja items he wanted? He asked for the list. तो उसने पुजारी को बुलाया और ऐसे बताया कि मुझे सत्यनारायण कथा करवानी है, तो इस व्रत के लिए जो जो सामग्री है आप बताइए, मैं सब इकट्ठी कर दूँगा। He saw the list and he asked, "Where is the cat in this? Where is the cat?" He was asking. जब पुजारी ने सब दिखा दिया, उसने पढ़ा और कहा कि लिस्ट में तो बिल्ली का नाम है ही। Pujari was very much surprised. Why cat? What is the meaning of the cat? पुजारी भी हैरान हो गया कि बिल्ली बिल्ली क्यों चाहिए। Yeah, cat. So what is the reason for cat? Pujari was asking surprisingly, why you need cat for puja? पुजारी ने पूछा कि पूजा के लिए बिल्ली की क्या जरूरत है। Then he told, no, no, it is our ritual in our house. I was observing from the childhood. So they were putting under the basket and they were performing. That's why, whatever it may be, I need a cat for this ritual. Please arrange. तो व्यक्ति बोला क्या बात कर रहे हो, मैं तो बचपन से देखता रहा, जब भी कथा हुई है तो पिताजी एक टोकरी लाते हैं, उसमें बिल्ली को पकड़ के रखते हैं, इसके बिना तो कोई हुआ ही नहीं। So it may be looks funny, but in so many ways we perform the rituals blindly. तो ये हो सकते हैं मजाकिया लगे, पर बहुत बार हम ये रीति रिवाजों का पालन करते हैं बिल्कुल अंधे होते हैं। The spirituality without knowledge is blind, आध्यात्मिकता भी बिना ज्ञान के वो अंधापन है, and knowledge without spirituality is mental speculation. और ज्ञान बिना आध्यात्मिकता के वो मानसिक speculation। So, like that, so our activities will be performing. So, we are fortunate, we have this Chaitanya Mahaprabhu's movement. So, we have the acharyas, we have scriptures. So, Prabhupada mercy, we got all the scriptures knowledge that we can perform paka. हमारा सौभाग्य है ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो हम जुड़े हैं, तो यहाँ पर आचार्य हैं, उनके उपदेश हैं, प्रभुपाद जी की ग्रंथ है, तो हमें पूरा हमारे पास एक बहुत बढ़िया बेस है ज्ञान का। So, here in this example of Puranjana, so Narad Muni wanted to make him understand, Prachin Bari, to make him understand, so why it is very important to perform the pure devotional service. यहाँ पर नारद मुनि चाहते थे कि राजा प्राचीन परिषद समझे कि शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना क्यों महत्वपूर्ण है। So anybody or in their activities, if you tell them this is right, this is wrong, this you should not do, you should not perform like this, means they will get angry. तो अगर आप किसी को बताओगे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, तो सामने वाला व्यक्ति गुस्सा हो सकता है। So that's why, so we are telling them it is a system that we have to understand, make them understand by telling some stories. तो इसलिए फिर उनको समझाया जाता है कि दूसरे तरीके से कुछ कथा सुनाकर। So that's why in this Srimad Bhagavatam, you see, there are so many pastimes, stories like this. तो इसलिए आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें कथाएं मिलती हैं। So these stories only to make us understand what is what. तो कथाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। So here the Narad Muni is using the same method and he is telling the story of Puranjana. तो यहाँ पर नारद मुनि भी यही तकनीक अपनाते हैं और पुरंजन की कथा सुना रहे हैं। So here Puranjana, the meaning is explained here, the body of enjoyment.
the body which wants to enjoy is called Puranjana. पुरंजन का अर्थ है वह शरीर जो कि भोग करना चाहता है. So, in this creation, we should understand there are two things. One is material and another one is spiritual. तो इस सृष्टि में दो प्रकार की वस्तुएं, एक भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक. So, to make this difference is very difficult to understand. So that is why we always think on the material platform and we think that this is spirituality. इसमें भेद कर पाना कठिन हो जाता है. कभी कभी हम भौतिकता का पालन कर रहे होते हैं और हमारे हिसाब से तो आध्यात्मिकता है. So we name it as Yukta Vairagya and we do whatever we want. और हम इसे युक्त वैराग्य के आगे जस्टिफाई भी करते हैं और जो हमारा मन के करते हैं. So that is why it's very important to take the austerities. तो इसलिए बहुत आवश्यक है तपस्या करना. So austerity is only meant for human body. तपस्या केवल मनुष्य जीवन के लिए ही संभव है. So in 84 lakh species, the body of human being is meant for austerity and no other living entities. 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य का देह है जिसमें तपस्या की जा सकती है. So why? Because to make us understand the real purpose of life and to understand the miseries of life, these things will be given. इस तपस्या का उद्देश्य कि हम समझ सके कि जीवन का क्या उद्देश्य और क्या समस्याएं से हम जूझ रहे हैं. So here one more verse purport it is explained. The purpose of human life is the getting out the miseries of the life and understanding the real happiness of the life. तो तात्पर्य में एक और महत्वपूर्ण चीज आती है कि हम समझे कि मनुष्य जीवन में क्या हमारे कष्ट हैं, उनसे कैसे हमें छूटना और वास्तविक आनंद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है. So number one point it is explained, the coming out from the miseries of the life. This is first point. तो पहला बिंदु है कि भौतिक जगत की जो भी कष्ट है उनसे बाहर निकलना. So miseries of the life is Dukkalayam and Ashashvatam. This is Dukkalaya is full of miseries and the life is very temporary. तो जीवन के कष्टों के बारे में हमें वर्णन मिलता है दुखालय और शाश्वत. एक तो इस संसार में दुख है और दूसरा ये अस्थायी है. So Dukkalaya, it is like Vastralaya. Vastralaya means, what is the meaning of Vastralaya? Where we get the clothes is Vastralaya. And Bhojanalaya, what is the meaning of Bhojanalaya? We get the food, that is called Bhojanalaya. Correct? Vachanalaya. What is Vachanalaya? We are going to read the books, that is called Vachanalaya. And what is Himalaya? Himalaya. So Himalaya is full of ice is called Himalaya. So these are all, that kind of things are always available, like Vastralaya, Bhojanalaya, Vachanalaya, Himalaya. जैसे वस्त्रालय है जहाँ पे आपको वस्त्र मिलते हैं, भोजनालय है जहाँ पे खाना मिलता है, हिमालय है हिमालय मतलब जहाँ पर भी बर्फ मिलती है. तो ये सब वस्त्र वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं. So in the same way, this is Dukkalaya. So it's the only Dukkha here. So one person went to Vastralaya and asked, anything hot item is there here? Any hot item is available? He asked in Vastralaya. He went to Vastralaya and asked hot item. तो ऐसी प्रकार के दुखालय है मतलब यहाँ पर दुख मिलेंगे. कोई वस्त्रालय जाए और पूछे कि कुछ गर्म चीजें खाने की, तो वस्त्रालय में तो खाने गर्म वस्तु नहीं मिल सकती. He is telling, sorry sir, you are mistaken. This is a cloth shop. You are not getting any hot item here. And another person went to the hotel and he asked, give me 2 meter piece of shirt piece and 3 meters of pant piece. Give me. He asked in the Bhojanalaya. तो दुकानदार कहेगा कि यहाँ तो ये तो वस्त्रालय है, यहाँ पर आपको खाने की वस्तु कहाँ मिलेगी. और कोई दूसरा व्यक्ति किसी भोजनालय में होटल में जाए और वहाँ पर कपड़ा मांगे तो दुकानदार क्या बोलेगा, यहाँ पे थोड़ा कपड़ा मिलेगा. It will be funny, no? So we going to the cloth shop and asking for the food and going to the hotel and asking for the cloth.
So it's funny. कपड़े की दुकान पे जाकर खाना मांगना या फिर होटल में जाके कपड़ा मांगना, तो ये तो मजाक है। So in the same way, in this Dukhalaya, we are asking for the happiness. इसी तरह यहाँ पे ये दुखालय है, यहाँ पर हम सुख मांग रहे हैं। So how it is possible? It's very difficult to get. It's not at all possible. तो ये संभव नहीं है, So that's why it is called as Dukhalaya. इसलिए इसको दुखालय बताया गया। So another one is Ashashwatam. Is very temporary. और दूसरा है अशाश्वत है, अस्थायी। So these things, Dukhalayam and Ashashwatam, these are things are connected to material body. दुखालय और अशाश्वत, ये दोनों शब्द संबंधित भौतिक शरीर के साथ। So in the body, of course, the happiness is there. That is very temporary. तो शरीर में सुख होता है निश्चित रूप से, लेकिन वो बहुत ही अस्थायी है। So it is like a itching, sense of itching. So itching sense is there. You are go on scratching. The happiness is there, but it's very temporary, and the wound will be increased. जैसे कभी शरीर के किसी भाग में खुजली होती है, तो आप खुजलाओगे तो थोड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन उससे जख्म और बढ़ेगा। So we go on scratching. The temporary happiness is there, but the wound will be increased. It will become a tumor. It may be a big disease, cancer. खुजलाते में कुछ आनंद तो मिलता है, लेकिन वो जो जख्म और बढ़ता जा रहा है वो परिवर्तित करता है कैंसर में भी, बड़ी बड़ी समस्याओं में। The solution for this is we have to go for the inner reason. That is, we have to go for the blood test. So then we will come to know the real purpose or reason of that disease. इसका जो वास्तविक समाधान है, जो शरीर के अंग में जहाँ भी खराबी है उसका वहाँ से ब्लड टेस्ट करवाएं और फिर सही उपचार हो जाए। So if it is outward, if we put the ointment like this, the itching will go here and again it will come here. If we put ointment, it will go here, again it will come. It will never go. हम खाली उसका बाह्य उपचार करें तो ऑइंटमेंट लगाया तो वहाँ से थोड़ा घाव ठीक हुआ तो दूसरे अंग में निकल आया, तो वहाँ ऑइंटमेंट लगाया इसी जगह निकल आया। So generally the medicines, so what we are thinking, the medicines is not to cure this disease, the medicines are to cover the disease. जो बीमारी है वो दवाइयाँ तो बीमारी का इलाज नहीं करती, वो खाली उसको कवर कर देती है, उसके जो लक्षण है उसको दबा देती है। You take any disease, any medicines, there is no permanent solution for this disease. तो आपको ये बीमारी होती है तो आप देखेंगे कि उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। Jai Shri Gaur Radha Vallabhji. So there is no permanent solution. So we are thinking we are going to hospital, we take tested, they will be giving a big file, and we are in the illusion that everything will be got tested, and they will tell nothing is happened, and you take this much of medicines, come after 1 month. तो वही बीमारी होती है जैसे, तो फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ से बड़ी सी फाइल डॉक्टर देते हैं और इसमें सब दवाइयाँ लिखी होती है, ये टेस्ट हैं, और फिर तो हमें भ्रम होता है कि हाँ हम तो ठीक हो जाएंगे। So if it is cured, why they are telling meet after 1 month? Why it is like that? Because there is no cure, it is only a covering. डॉक्टर बोलते हैं 1 महीने बाद दोबारा आना, अगर वो ठीक हो जाने वाली थी तो फिर क्यों बुला रहे हैं दोबारा बार बार 1 महीने बाद फिर। So everybody has experienced headache. Everybody has experienced headache. So generally headache means we use some balm, Amritanjan or Vicks balm, we apply. So that Vicks or Amritanjan, whatever is the balm we are using, that pungent smell is more stronger than our headache. It is the headache will be there inside. So because of that pungent nature, we are feeling that we are comfortable out of headache. It is headache is there always. जैसे सबको यहाँ पर सिर दर्द का अनुभव होगा, तो जब सिर दर्द होता है तो हम कुछ बाम लगाते हैं, अमृतांजन विक्स के ऊपर, तो लेकिन उसकी
जो स्मेल होती है तो वो इतनी घाट, उसकी जो strong. सुगंध होती है वो इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि उसकी सुगंध से हम भूल जाते हैं कि हमारे सर में जो दर्द अंदर हो रहा है। तो एक तरह से वो सर का ठीक नहीं हुआ, खाली उसकी सुगंध से हमारे जो सिर के दर्द को कवर कर रही है। So this is like temporary happiness. It is called as praise. It is called as praise. Praise, praise. तो ये एक क्षणिक सुख है जिसको हम प्रेयस बोलते हैं। So the second point is the coming. First point is coming out from the miseries of the life, and second point is to come to the real happiness of the life. Second point, the purpose of human life. तो मनुष्य जीवन के उद्देश्य के दो बिंदु, तो पहला था कि सब भौतिक कष्टों से बाहर निकलना, और दूसरा है कि जो असली आनंद है उसको प्राप्त करना। So we discussed that there is no happiness in this material world. It's dukkhalayam, asashvatam, always misery is there. But it is connected to only material. Moment we come to the spiritual, there is always happiness is there. तो अभी हमने चर्चा किया कि इस भौतिक जगत में तो कष्ट ही कष्ट है, कोई सुख नहीं है, तो फिर आनंद का कैसे बात हम कर सकते हैं। तो ये जो कष्ट है वो भौतिक धरातल पर है, तो आध्यात्मिक धरातल पर हम आते हैं तो हमें असली आनंद मिल जाता है। So this body, of course, is a vehicle. So we are carrying, everybody are carrying this vehicle. The real happiness is moment we connected to this soul. The real happiness is connected to the soul. शरीर तो एक वाहन जैसे सबको एक वाहन ये मिला है। वास्तविक सुख है जब हम सोल आत्मा से कनेक्ट होते। So here in this chapter, Puranjana, that Puranjana is nobody, that we are all Puranjanas. So we are traveling. The Puranjana was traveling in search of his happiness, a comfortable place. He was traveling. Puranjana was traveling. तो हम सभी पुरंजन जैसे ही हैं, जैसे पुरंजन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, और उसका उद्देश्य का आनंद प्राप्त करना। So in the same way, we are traveling in 84 lakh species. According to our desires, we are getting different bodies. इस प्रकार हम भी 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, और हमारी इच्छा के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। So in the olden days, we want to get any materials like groceries or anything we want. There were only limited items were available in the olden days. पहले के दिनों में जब हमें कुछ ग्रोसरी वगैरह खरीदनी है तो कुछ लिमिटेड लिस्ट होती थी, हाँ ये सब आइटम। See, for example, our domestic use, we use soap, paste, we use some books or pen, anything. So there were very limited option was there. तो जैसे आपको साबुन, पेस्ट या पेन खरीदनी है तो कुछ लिमिटेड चॉइसेस होती थी, ये मिल सकते। So the human tendency, he wants the varieties, he wants so many varieties. मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो विविधता चाहता है, बहुत सारी वैरायटी। So that's why whatever we are using, you see nowadays, we get the whole store will be of whole department, whole section will be of only the bath soaps. The whole section will be only of brush, only of paste. So many varieties. Go to the department stores, the section will be only of the bath soaps, only of the brushes, only of the paste. कभी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो पूरा पूरा एक पूरा सेक्शन है जहाँ पे ब्रश अलग अलग तरीके के, पूरा सेक्शन साबुन से भरा हुआ है, एक पूरा सेक्शन है जो पेस्ट से भरा हुआ है। Previously we were using pen, one or two pens will be there. So now there is a shop of full of pens. It's called Pens Corner. You see. पहले हम पेन यूज करते थे तो कुछ वैरायटी होती थी गिनेस में, पर अभी तो पूरे पूरी पूरी दुकानें हैं पेन्स कॉर्नर नाम से। So previously they were using only, like we are from South India, we eat idli dosa. We eat only idli dosa. In the breakfast we eat idli dosa. So now there is a shop of called dosa corner, idli corner. Is full of idli and dosas in that varieties. हम साउथ इंडिया से तो हम नाश्ते में इडली डोसा ही खाते हैं, तो
तो अभी तो पूरा पूरी पूरी दुकान है, खाली डोसे की दुकान है, इडली की दुकान है। So there the base is only one. The flour what they are mixed is only one thing. And they made the varieties that if they put onion is onion dosa, if they put chili is chili dosa, if they put paneer is paneer dosa, like that. They make so many varieties and it became a dosa corner. उसमें जो आटा है वो तो एक ही है, अंदर की चीज तो एक है, बस उसमें प्याज डाल देते हैं तो प्याज डोसा बन जाता है, चीनी डाल देते हैं तो चिली वाला डोसा बन जाता है, पनीर डाल देते हैं तो पनीर डोसा बन जाता है। So in the way, same way, in the creation, there are 84 lakh species. So you see that sloka is there. So Chaturlakshani Manavaha. Huh? So that sloka is there, no? How much the insects are there, how much the birds are there, how much the aquatics are there, how many trees are there, so how much moving bodies, non-moving bodies. You see 80 lakh species of those varieties are there in this creation. देखते हैं शास्त्र में दिखाते हैं कि कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार के एक्विटिक्स हैं, कितने प्रकार के रेप्टाइल्स हैं, अलग अलग जीवों की संख्या में होगी। Finally, there are Chaturlakshani Manavaha. There are 4 lakh species of human beings. और फिर बताया गया कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। See, 4 lakhs consciousness. 4 lakhs consciousness. तो 4 लाख प्रकार के अलग चेतना है। So that's why the Jiva is traveling. Is explained in Chaitanya Charitamrita. So what is that? Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bija. This sloka is explaining. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe, some of them being elevated to the upper planet systems, and some of going down into the lower planetary system. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the many, both Krishna and spiritual master, such a person revives the seed of creeper, the Bhakti Lata, devotional service. देखते हैं ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं जो कि ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं, कभी उच्च योनियों को प्राप्त होते हैं, कभी निम्न योनियों को प्राप्त होते हैं। जब कृष्ण की कृपा से उनके जीवन में प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं तो उनको भक्ति लता का बीज प्रदान करते हैं और फिर उनका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करते हैं। So in Bhagavad Gita also is explained Bahunam Janmanamante Jnanvamam Prapadyate Vasudevam Sarvamiti Samatma Sudurlabha. So Bahunam Janmanamante, what is that Bahunam Janmanamante? That Bahunam Janmanamante is 84 lakh species. It is traveling 84 lakh species. So finally that Mahatma will become, so mercy of the Lord, he will understand that Vasudevam Sarvamiti. It's very rare. It's very rare. भगवद गीता में जैसे हम देखते हैं भगवान बताते हैं नाम जन्मनामते ज्ञान नाम प्रपद्यते, तो बहुजन क्या है, 84 लाख योनि ही बहुजन। वैसे बहुत बहुत योनियों में चलने के बाद किन्हीं बहुत ही रेयर महात्मा को ये अनुभूति होती है कि भगवान वासुदेव ही सब कारणों के कारण। So in the same way Puranjana was traveling and at the final stage he came to Bharatvarsha, Bharatbhumi. इसी प्रकार राजा पुरंजन भी भ्रमण कर रहे थे और अंत में वे भारतभूमि पहुंचते। So there, so he is experiencing this, what we are reading these verses. So that he is experiencing the 9 gates. The 9 gates are explained as 9 holes of this body. They symbolize the Puranjanas and the body is explained. The comparatively it is explained. भारतवर्ष में जो उनकी अनुभूति होती है तो उसी का वर्णन इन श्लोकों में हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर भारत की तुलना इस शरीर से की है, जैसे भारतवर्ष में उनको 9 द्वार मिले, तो ये शरीर के भी 9 द्वार हैं। So 9 gates are explained, these 2 eyes, nose, mouth, 2 ears, then 2 genitals is explained like this in the purpose. 9 द्वार हैं, इसमें 2 आंखें, 2 नासिकाएं, मुख, 2 कान और जनेंद्रियों। So here it is explained the
Jiva is bewildered by the external things. The Jiva is bewildered by the external things. यहाँ पर वर्णन है कि जीवात्मा बाह्य वस्तुओं से भ्रमित हो जाता है। So that is explained here in this today's translation. I will read this translation now. On the outskirts of the city were many beautiful trees, creepers encircling the nice lake. Also surrounding that lake were many groups of birds and bees that were always chanting and humming. श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। उस नगर के धार्मिक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे, जो सदैव पूजते तथा गुंजार करते रहते। So that is beautifully explained in this purport. The external, the attraction is the opposite gender. Opposite gender. यहाँ इस श्लोक में वर्णन आता है तो अपोजिट विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। So it is beautifully explained by His Holiness Bhaktivikas Maharaj in the Brahmacharya and Krishna consciousness. So everybody how to deal with Matai, the woman, how to deal one with the Matajis. परंतु जब विकास महाराज कृष्ण भावना में ब्रह्मचर्य पुस्तक में बताते कि कैसे हमें माताओं के साथ बर्ताव करना चाहिए। So that's why in our society it is compulsory that one should see all the Matajis as mother and we should call everybody as Matajis. बहुत आवश्यक है हमारी सोसाइटी में कि हम माताओं की तरह देखें और उनको माताएं बोल के संबोधित करें। So it is very important to get trained from the beginning. So otherwise, whatever the problems are explained here, that problem will come. That's why for everybody, the training is very important. आवश्यक है कि शुरुआत से प्रशिक्षण हो, वरना फिर ये सब समस्याएं यहाँ पर लिखित है वो आ सकती है। तो इसलिए ट्रेनिंग शुरू से ही पूरी रहनी चाहिए। So that's why we are very fortunate and you are also, we see here, you are very fortunate, you are under the guidance of His Holiness Bhaktivikas Maharaj. So by the mercy of Guru and Krishna, so we came to this Krishna consciousness and we are understanding what is what, and it is everybody's duty to come out from this problem. हम सबसे भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य भक्तिदास महाराज के निर्देशन में और गुरु और कृष्ण की कृपा से हम देख पा रहे हैं कि क्या वास्तविकता है। So in Bhagavad Gita in third chapter also is strongly told the lust is the only enemy of our life. It is explained in the verses. भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो काम है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। So that's why here in this verse, so Narada Muni wanted to tell through Puranjana, so we should come out from this material desire and bodily desires and come to the Krishna consciousness, understand who am I, understand the soul and understand the purpose of life and getting the real happiness of the life, that is called as Shreyas. यहाँ पर नारद मुनि जी राजा पुलंजन के माध्यम से वही उपदेश दे रहे कि कैसे हमें भौतिक इच्छाओं को छोड़ना है, जीवन के उद्देश्य को समझना है और जो वास्तविक लक्ष्य है परम आनंद को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वही सभी शिक्षाएं हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। The happiness connected to the body is temporary, is called prayas, and the happiness connected to the soul, that is Sachidananda, always happy, always blissful, always knowledgeable, and is eternal. शरीर से जो संबंधित सुख है वे क्षणिक है, वो प्रियस कहलाता है, और जो आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसके धरातल पर जो सुख होता है वो इतने में शाश्वत है और वो श्रेयस है। The bodily is asat, niranand, and is temporary, and the connected to the body, connected to the soul is Sachidanand, is always blissful, knowledgeable, and eternal. भौतिक शरीर असत अचित और निरानंद है, उसके विपरीत जो आत्मा है वो शाश्वत है, उसको पूर्ण ज्ञान है और हमेशा आनंदित रहती है।
So that's why Chaitanya Mahaprabhu told that real Ananda will get by the soul get purified. That is possible by chanting Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमें वास्तविक आनंद आध्यात्मिक धरातल पर मिल सकते हैं भगवान के पवित्र नाम का हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके। The conclusion is Cheto Darpana Marjanam Bhava Maha Davagni Nirvapanam. The moment we chant seriously, the heart will be cleansed. So we will come to the platform of Anandambudhi Vardhanam. निष्कर्ष है कि हम पूरी गंभीरता से जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ होता है और जो हमें वास्तविक आनंद जो हमेशा बढ़ता रहता है वह प्राप्त होता है। See, is Ananda Ambudhi Vardhanam. Ananda is happiness, pleasure. Ambudhi is the ocean, and Vardhanam is always increasing. Ananda Ambudhi Vardhanam. आनंद का बुद्धि और आनंद सुख अमुदी मतलब समुद्र और बद्र मतलब जो हमेशा बढ़ता है। So that we can experience everybody by this example. तो इसका हम साक्षात्कार कर सकते हैं यहाँ पर इस कथा के माध्यम से। Hare Krishna. So time is there, Babu. Time is there.